Hello, welcome. This is S. Syed Nabidar. We'll be starting a video lecture on the block diagram reduction technique, essentially. So, let's go behind and revise a bit regarding the open loop and the closed loop system. So, in the previous lecture, what we have seen in the open loop and the closed loop system geometry, that if any system is being fed from the output and its input gets compared, then such a system is called as an essentially a feedback system or a closed loop system. So in any system, there are certain basic essential requirements or essential tools, you can say, for that matter. So these tools are basically in the input side, you have the input transducer, controller, plant, feedback, output transducer. These are the basic elements of the block diagram, we can say. So here also you can see that there is an actuating signal which was like the previous closed loop system, which was reduced, and it was shown that Cs by Rs is equal to Gs1 plus minus GSHs depending upon the type of feedback, whether it is a positive feedback or a negative feedback system. So here to notice there is some essential points here. This point is called as the summing point, whereas there is comparison between the input and the output. So here this point is also called as the comparator. You can see this point can be also said as the comparator, and usually this output transducer, it is in a form of a sensor. What it does is that it converts the output in the form of input, because suppose we are at an output, we are getting speed. Now what we have to do, we need to convert this to voltage. Hence it can then only be compared with your input. Suppose your input is in the form of voltage. That's the reason we have this mechanism of transducer and the sensor feedback, which is getting compared, and this summing block is called the comparator. And from after the comparator, an error signal is getting generated, and this is called as the actuator. Okay, actuator. And wherever any control action is required, this is called the control action. And suppose if we have a gas furnace or a car control, so whichever instrument on which the control action has to be performed is called as a plant. So here you can see, for example, this is an example of an open loop system. If you look at the DC motor over there, so this is an example of an open loop system over here. You simply see there is no feedback mechanism over here, and here you can see the thermostat, and here this is the actuator basically, and this is the plant, this is the reference input. So whatever the reference we are giving, this is the reference input over here, and the gas valve and the furnace is basically the plant, and gas valve is acting as a controller. It is acting as a controller, and there the feedback mechanism over here, this is the feedback, wherein this heat loss, suppose you open the window, close the window, there would be variation in the heat. This can be summarized as a disturbance, and you have the actual room temperature, which is the actual output you are getting. This is your actual output, and your input is also your reference input. In some books it's also expressed as the desired output. So many block diagrams, many different systems would have the same block diagram, but why it is important? Because we can get a mathematical relationship between these values, and we can assemble it in a computer program for simulation purposes and get the desired output. Hence the need of block diagram is very important. It can be used to model linear as well as the non-linear system, so it's a very important tool. So let's straight away go to the block diagram reduction rules. Let's see, we will be studying how the blocks which are connected in series get multiplied, how which are connected in parallel get added, and we'll see when the block summation rules are there. If we shift the block from ahead, a summing point ahead, or a summing point behind, or a takeoff point ahead, or a takeoff point behind, and there are some critical rules and the minor feedback rule. We'll be stating it in the other slide. So let's go. Here you can see this is simple. If the two blocks are arranged in series, you can see over here we have two blocks which are arranged in series. दो ब्लॉक हैं जो सीरीज में अरेंज है. So here you can see this is G1 of S, G2 of S. So if you write X of S, so in series signal will get straight away
You get x of s in form of, this is a of s into g2 of s. So here you can see a of s, g2 of s. Similarly, a of s is nothing but u of s into g1 of s. Now x of s can be written as a combination of g1 of s and g2 of s straight away from this, and you can get, this is very simple. I hope you must have understood it. The same scenario over here in the parallel case also, but the only thing here I want to express to you is that if this symbol is, instead of plus, this is minus, then the value of g of s which we are getting will not be g1 plus g2 of s, it will be g1 of s minus g2 of s. This is very important. Rest equations you can understand. This is not a big rocket science. Now here block diagram reduction rules for summing points ahead and behind. Now you see over here, this is a block diagram over here, block diagram over here. So this block diagram, if you look at, so you have r of s, x of s, g of s, and c of s. Now what I want to do is I want to move this point, this summing point, I want to move this point ahead. Means like here I want to move this point. So in this I have moved this point ahead. But if you look at the valuation of this point, so this is r of s is coming, r of s plus minus x of s. So here you will get r of s plus minus x of s into g of s. What is this? This is the value of c of s. So if I elaborate it, it will come as r of s into g of s, r of s into g of s plus minus x of s into g of s, x of s into g of s. And the problem is when I'm taking, and the value of x of s remains same, x of s, if I'm taking, what I do is that I take this x of s here as, and I write it as z. So when I'm writing it as z, what I do is that my new output comes as c of s is equal to r of s into g of s, and here it is plus minus z. So my this plus minus z, it should be equal to what? If we are shifting the block, the value of the block should not change. So the value of z should be equal to x of s into g of s. So the value of z here should be equal to x of s into g of s when I am moving the block ahead. In order to get this value of z x of s into g of s, what I need is I need to multiply this signal by g of s like I have seen over here. Then only the value, corresponding value will remain same. Otherwise it will be only r of s, g of s plus x of s. So when we are moving ahead, जब हम आगे ब्लॉक को ले जाते हैं तो हम मल्टीप्लाई करते हैं बाई जी ऑफ एस समिंग पॉइंट को. सेम, now look at the point over here. This point is r into g of s plus minus x of s. r into g of s, ये आ गया r into g of s यहाँ पर, ठीक है. और यह यहाँ से आ गया प्लस माइनस एक्स ऑफ एस, ये इसका आउटपुट है सी ऑफ एस. ठीक है, ये आ गया समझ में आपको. अब अगर मैं इसी पॉइंट को मैं पीछे ले जाऊं, ये आगे था, अब मैंने इसको पीछे ले गया, पीछे इधर. जब मैं पीछे ले जाता हूँ इसको तो इधर ये आ गया. सेम व्हाट आई एम राइटिंग, आर ऑफ एस प्लस माइनस जेड इंटू जी ऑफ एस. जब मैं उसको खोलता हूँ तो आर ऑफ एस जी ऑफ एस प्लस माइनस जेड इंटू जी ऑफ एस. मगर मेरे को यहाँ पर एक्स ऑफ एस ही चाहिए. जेड इंटू जी ऑफ एस जो होगा वो एक्स ऑफ एस के बराबर होगा. इसीलिए क्या होगा, मेरा z होगा एक्स ऑफ एस बाई जी ऑफ एस. अब मैं इस ब्लॉक को क्या कर रहा हूँ, मैं इस ब्लॉक को पीछे ले रहा हूँ. जब भी मैं पीछे लूंगा किसी भी ब्लॉक को तो याद रखिए 1/g ऑफ एस, एक्स ऑफ एस सिग्नल को जी ऑफ एस से डिवाइड करना पड़ेगा. तो आगे लेते वक्त समिंग पॉइंट को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, पीछे लेते वक्त समिंग पॉइंट को आपको डिवाइड करना पड़ता है. और अब सिंपल है, अभी हम टेक ऑफ पॉइंट की तरफ जा रहे हैं. मगर आपको अगर एक सिंपल ट्रिक मैं बताऊंगा, अगर आपने एक पॉइंट का याद रख लिया, फॉर एग्जांपल समिंग पॉइंट का आपने याद रख लिया, आगे लेते वक्त हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, पीछे लेते वक्त डिवाइड करते हैं. टेक ऑफ पॉइंट को आगे लेते वक्त डिवाइड करते हैं और पीछे लेते वक्त मल्टीप्लाई करते हैं. सिंपल सी बात है. अब वो भी दिखाएंगे आपको. सपोज ये आपका ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन रूल फॉर पिकअप, इसको इस पॉइंट को बड़े नाम है बुक्स में, आदि बुक्स में इसको पिकअप भी बोलते हैं, ब्रांच भी बोलते हैं, टेक ऑफ भी बोलते हैं. एंड इसको अहेड एंड बिहाइंड के बारे में आप दिखाएंगे. ये जो अभी है ये है, ये टेक ऑफ पॉइंट है यहाँ पर. अब मैं इसको अगर इस यहाँ से पीछे ले जाऊँ, ठीक है, बिहाइंड ले जाऊँ पीछे, यहाँ पर देखिए इस टेक ऑफ पॉइंट की वैल्यू जो है आर इंटू जी, आर जी है, वाई की भी वैल्यू आर जी है.
मगर सपोज इस टेक ऑफ पॉइंट का नाम मैं जेड दे दूं, जब मैं इस टेक ऑफ पॉइंट को पीछे रखूं, सी तो आर जी के बराबर होगा, मगर जेड आर के बराबर होगा। मगर जेड हमको किसके बराबर चाहिए? जेड हमको चाहिए वाई के बराबर, इसी, और वो आर जी के बराबर होना चाहिए। तो ये तभी पॉसिबल है जब हम पीछे लेते वक्त टेक ऑफ पॉइंट को मल्टीप्लाई करेंगे बाई जी। हमने देखा था टेक ऑफ समिंग पॉइंट को पीछे लेते वक्त हमको क्या करना पड़ता था? डिवाइड बाई जी। समिंग पॉइंट को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो मैंने आपको पिछली मतलब पिछली स्लाइड में बोला था आपको। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए, आगे आप देखेंगे आर बाई जी, इधर पे आप देखेंगे, इसको मैं आगे लेता हूँ, इधर सिग्नल की वैल्यू आर है, इधर सी आर बाई जी है। जब मैं इसको अब आगे लेता हूँ, हेड लेता हूँ, तो यहाँ पर सिग्नल की वैल्यू आर जी आ गई, सी आ गया आर जी, मगर z इज इक्वल टू आर जी वाई के बराबर होना चाहिए। ये वाई के बराबर कब होगा? जब z को डिवाइड करेंगे g से। जब z को हम g से डिवाइड करेंगे, जब हम z को g से डिवाइड करेंगे, तो हमको सिग्नल को डिवाइड करना पड़ जाएगा किससे? g से। तभी हमको यहाँ पर आएगा r बाई जी, 1/g, तभी हमको r की वैल्यू आएगी। इट इज सिंपल, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, यू कैन लुक एट दिस। And this was removing the minor feedback loop. Those who are getting any confusion, I have solved this in my previous lecture on open loop and closed loop systems. Please have a look on open loop and closed loop systems. This is very simple. ठीक है, उस पे we have detailed it. Now avoid such shifting. Like for parallel combination, if there are two these things, you get a takeoff point over here. So this is wrong shifting. Okay, you cannot take this point to here. It is better to take this point here, not here. So this is the wrong method of shifting. Now there is one critical rule. Suppose you at a time get a takeoff point and a summing point. Okay, what you have to do is that you need to shift this point from here at this point to here. So if you look at the response, this is R1, this is also R1. So here you get R1 plus minus Y, है ना? इस point को suppose this point is P and this point is suppose Q. Let it be. P तक तो R1 है, R Q पे है R1 plus minus Y. Same point है वहां पर भी R1 plus 1 minus Y, यहाँ पर भी R1 plus minus Y. अब आपको क्या करना है? ये point को आप ले रहे हो, ये अभी पीछे था इसके टेक ऑफ पॉइंट, या आप इसको आगे ले रहे हो। जैसे ही आपने इसको आगे लिया यहाँ पर, तो आपको ये नोटिस करना है इसकी वैल्यू तो R1 है, ठीक है जी। तो इस पॉइंट की जो वैल्यू, Z की वैल्यू भी R1 होनी चाहिए। अब यहाँ पर जब आपको रिस्पॉन्स देगा, C की वैल्यू जो आएगी आपको R1 प्लस माइनस वाई आएगी, है ना? और Z की वैल्यू भी आ रही है आपकी R1 प्लस माइनस वाई। सपोज Z की वैल्यू अगर सिग्नल में सिर्फ प्लस है, R1 प्लस वाई हुआ, तो आपको Z को इजिकल टू एक्स कब बना सकते हो? आप इजिकल टू R1 कब बना सकते हो? जब आप Z को करोगे माइनस वाई, है ना? माइनस वाई करोगे। अगर सपोज Z की वैल्यू R1 माइनस वाई होती, तो आपको Z इजिकल टू एक्स इजिकल टू R1 कैसे कर सकते हो? जब आप Z को क्या करोगे? Z को क्या करोगे आप? Z को आप करोगे प्लस वाई, Z प्लस वाई करोगे आप, सॉरी इधर पे Z माइनस वाई आपको देगा, आपको R1, इधर आपको Z प्लस वाई R1 देगा। उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम एक समिंग सिग्नल लेते हैं इधर पे, प्लस माइनस जो है, और इसको इन्वर्ट करके देते हैं, या इन्वर्ट करके देते हैं, गलत यहाँ पर है। अगर ये माइनस है, ये प्लस है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ गया R1, ठीक है जी, प्लस माइनस वाई इधर पे। अब आप नीचे जा रहे हैं, ठीक है, इधर पे एक्स इसके लिए, तो अगर आपका प्लस है तो इधर पे माइनस है, अगर ये है तो इधर पे प्लस है, और वो आप मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ? वाई के साथ। तो इधर पे आपने वाई दिया, देख लीजिए यहाँ पर R1 प्लस वाई, तो माइनस वाई कट गया, ये R1 आ गया। सिमिलरली वाइस वर्सा दूसरे केस में भी हो जाएगा। अब दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिटिकल रूल है, वो ये वाला रूल है कि आपको एक्स R1 जो है, यहाँ पर आप देखिए, इसको अगर आप पीछे ले जाओगे तो कैसे होगा? इसको पीछे ले जाने के लिए आप, एज सिंपल एज दैट, तो इसको पीछे लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये एक्स इज इक्वल टू R1 प्लस माइनस वाई है, इसको अब आप इस सिग्नल को आप यहाँ पर लेना चाहते हैं, तो आपको देखिए यहाँ पर जो x की वैल्यू है, टेक ऑफ पॉइंट की वैल्यू है R1 प्लस माइनस वाई आई है।
अब आपको यहाँ पर आप देख रहे हैं z की वैल्यू क्या है r1, तो मगर आपको z की वैल्यू क्या चाहिए, क्योंकि सिग्नल सेम रहना चाहिए r1 प्लस माइनस वाई। तो ये सिंपल है कि आपको एक समिंग सिग्नल लगा दीजिए और उसको सेम प्लस माइनस वाई कर दीजिए जब आप इसको पीछे लेंगे। तो ये देखिए, ये तो एज सिंपल एज दैट रहा। तो इस सिग्नल को एक समिंग सिग्नल लगाए, प्लस माइनस वाई करिए, और यहाँ पर प्लस तो एक्स प्लस माइनस वाई या आर वन पर, ये दो क्रिटिकल रूल्स है। अब हाउ टू सॉल्व ब्लॉक डायग्राम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज, कोई भी ब्लॉक डायग्राम आपको मिले तो सबसे पहले व्हाट यू डू, ट्राई टू डू इज दैट you have to reduce the blocks connected in series and then parallel first। सबसे पहले ब्लॉक्स देखिए कौन सी सीरीज में है, उनको रिड्यूस करिए, उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे आपको G1 G2 G3 जितने भी ब्लॉक्स है मल्टीप्लाई हो जाएंगे। पैरेलल में जो भी ब्लॉक्स है, जो समिंग सिग्नल होगा, अगर प्लस में होगा तो ऐड हो जाएंगे, अगर माइनस में होता है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। उसके बाद माइनर फीडबैक लूप, आपको इसका फार्मूला मालूम है, G डिवाइड बाई 1 प्लस GSHS, ये करिए। और अनटिल एंड अनलेस, अगर जब तक जहां पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है किसी क्रिटिकल रूल लगाने की तो नहीं लगाइए। और जहां तक हो सके आप प्रॉब्लम में ये कोशिश करिए कि जो भी टेक ऑफ पॉइंट है उसको राइट की तरफ शिफ्ट करने की कोशिश कीजिए, और समिंग पॉइंट्स को लेफ्ट की तरफ। और जब तक कि आप चाहे, और क्रिटिकल रूल को आप छोड़ दीजिए, उतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और तब तक ये तीन स्टेप्स रिपीट करिए जब तक कि आपको ट्रांसफर फॉर्म, जो फाइनल ट्रांस सी ऑफ एस बाई आर ऑफ एस आ नहीं जाता, आउटपुट बाई इनपुट आ नहीं जाता। होप यू हैव अंडरस्टूड these block diagram rules। Thank you very much, and let me stop the video।